गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स के लिए एक अमेंडमेंट बिल निकाल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा। तो एक्चुअली आपको पता होगा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 1960 का एक्ट है जिसको एनिमल लवर रुक्मिणी देवी अरुणदले जी ने जो है वो बनाया था। 1960 में उसको पास किया गया और उसी के अंदर ही हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनाया हुआ है। लेकिन अब एग्जिस्टिंग लॉ को क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है एनिमल अब्यूज़ के केसेस बहुत आ रहे थे। जैसे राजस्थान के जोधपुर का एक बहुत ही घिनौना केस था, जिसमें एक डॉक्टर ने अपने डॉग को कार के साथ टाई करके ड्रैग किया था। तो ऐसे केसेस बहुत कॉमन होने लग गए थे। लेकिन क्या हो रहा था कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 428, सेक्शन 11, इसके अंदर जो पेनल्टीज़ हैं वो 10-50 रुपए की हैं। और अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है उसके भी 25 से 100 रुपए की पेनल्टी लगती है, जो कि बहुत ही कम है। अब वो उस समय के हिसाब से ये पेनल्टी रखी गई है, तब से इसको अमेंड ही नहीं किया गया है। इसीलिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज एंड अदर्स के केस में कहा कि पार्लियामेंट को ज़रूरत है कि वो पीसीए एक्ट के जो है अमेंडमेंट करे और इफेक्टिव डेटरेंट लेके आए। उसके बाद बहुत से एमपीज़ ने भी लिखा जो है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2021 में बोला कि हम एक बिल लेकर आ रहे हैं और हम इसको अप्रूव जो है वो बस कैबिनेट से अप्रूव करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट बस अब उस आगे उस डायरेक्शन में बढ़ चुकी है। तो अब इसमें मेजर अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज की गई हैं? एक तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स रखी गई हैं, बहुत टाइटर पनिशमेंट्स रखी गई हैं। बहुत से ऑफेंस जो हैं उनको कॉग्निजेबल बना दिया गया है। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? मतलब कोर्ट में ही जाकर वो उसका निपटारा होगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होगी। ठीक है। फिर बेस्टियलिटी, बेस्टियलिटी क्या होता है? डूइंग सेक्स विद एन एनिमल। ठीक है। तो उसको भी जो है ग्रूसम क्रुएलिटी के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। और इस लॉ में कहा गया है कि एक कम्युनिटी एनिमल जो होगा, मतलब जिसका कोई भी ओनर नहीं है, मतलब जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो उसके जिम्मेदारी लेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 1 से जो है जीएसटी की प्रॉफिटेरिंग की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो अभी तक नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी डील करती थी, वो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डील करेगा, क्योंकि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को जो है वो अब डिसबैंड किया जा रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली जो है 2019 में ही डिसबैंड करने का प्लान था, लेकिन फिर तब 2 साल के लिए एक्सटेंड करके 2021 में डिसबैंड करने को कहा। 2021 में भी नहीं किया, तो अब 2022 में एटलीस्ट इसको डिसबैंड किया जा रहा है। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है क्या? तो जो भी कोई कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई जीएसटी का रेट कट करती है, लेकिन क्या करते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या आपके जो, जैसे समझ लो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जब आपके 18% जीएसटी जब पहले लगता था रेस्टोरेंट में, आपको याद होगा बहुत ह्यू एंड क्राई भी हुआ था जब। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 5% जीएसटी कर दिया, तो भी जो रेस्टोरेंट्स के जो आपके जो ओनर्स थे, उन्होंने प्राइजेस को कम नहीं किया। ठीक है। तो इसीलिए जो है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आती है और कहती है कि हमने अगर जीएसटी का रेट कट किया है, तो आप कंज्यूमर को उसका बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे हो? आप अपने प्राइस जो है, आप अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए उसको प्राइस को कट नहीं करते हो। या फिर जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरर को, तो भी वो जो है उसका प्राइस का बेनिफिट जो है कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को जब नहीं देता है, तो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी 2017 में ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनाई गई थी अंडर जीएसटी लॉ। और इसका मोटिव यही था कि अगर कोई जीएसटी में रेट में रिडक्शन होती है तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिले। तो शुरुआत में जैसा आपको मैंने बताया कि 2019 तक के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसको 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया और रादर अब तो 2022 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। अब इसमें होता क्या था? 3 टियर स्ट्रक्चर इसमें काम करता था। पहले जो है स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग या स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो जो है इन्वेस्टिगेशन करती थी हर कंप्लेंट का। फिर उसके बाद जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है, उसके पास वो कंप्लेंट जाती थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसके बाद ही जाकर जो है ये नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आती थी और उसके खिलाफ जो है जो भी सप्लायर के खिलाफ प्रॉफिटेरिंग के जो है एक्शन लेती थी। मतलब उसमें होता क्या था? जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज की गई है उसको रिटर्न करना और 18% इंटरेस्ट के साथ उसको कंज्यूमर को रिटर्न करना। तो सिर्फ एक ही कंज्यूमर नहीं, जितने भी कंज्यूमर से वो चार्ज किया गया था उन सबको वो अमाउंट रिटर्न करनी पड़ती थी। इन केस अगर ना पता लगे कि कितने कंज्यूमर्स हैं, तो वो सारी जो है पैसा जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दिया जाता था।
ठीक है। तो इसको बनाया क्यों गया था? ऑफ कोर्स इसीलिए ही बनाया गया था, जैसा मैंने आपको बताया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर कोई बेनिफिट है या फिर रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है, तो उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को मिल सके, सप्लायर उसको जो है ये बहाना ना यूज़ करे कि हमारे तो अब जो है खर्चा एक बार बढ़ गया और उसके बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को ना दे अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। उसके लिए ही जो ये नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सोशल इशूज़ और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट उनके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा जो है ये पता किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7.2% से डिप हुआ है जुलाई टू सितंबर 2022। ठीक है, अब जो है इस डेटा में को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट करता है, जो है कलेक्ट करता है, और जो है अप्रैल 2017 से इस डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाता है, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सब जो है वो इसमें एस्टिमेट की जाती हैं। और रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही जो है वो एक लेवल पर जो है वो एनुअली स्टेटस दिखाया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है क्या। ठीक है, अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या डेफिनेशन क्या है कि अगर आपको एक हफ्ते के अंदर 1 घंटे भी काम नहीं मिला है तो लेकिन आप अवेलेबल थे काम के लिए या आप काम ढूंढ रहे थे, तो इसको आपको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, अब हाईलाइट्स क्या कह रही हैं? हाईलाइट्स ये कह रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फीमेल में है वो 9.4% 9.4% से डिक्लाइन हुआ है, और अगर हम मेल्स के कंटेक्स में देखें अर्बन एरियाज में तो वो 6.6% से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को जो है वो परसू करने के लिए डिसाइड किया है। और जीसीसी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन और ओमान, है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, और बेसिक गोल इनका ये है कि आपस में ये यूनिटी बना के रखना चाहते हैं। जो इनकी हाईएस्ट बॉडी है वो सुप्रीम काउंसिल होता है, और इनकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो आपस में रोटेट होती रहती है मेंबर कंट्रीज़ में अल्फ़ाबेटिकली। मिनिस्ट्रियल काउंसिल में इनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, और इनका सेक्रेटरीट जनरल जो है वो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म होता है। अब इंडिया का ट्रेड रिलेशंस अगर हम देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ही है जीसीसी, है ना। अब क्योंकि हम इनके साथ ऑयल का ट्रेड बहुत कर रहे हैं, गैस का ट्रेड कर रहे हैं, तो लगभग 35% ऑफ इंडिया का ऑयल का इंपोर्ट और 70% ऑफ गैस का इंपोर्ट जो है जीसीसी कंट्रीज से ही आता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं क्रिप्टोलॉजी, सिक्योरिटी के लिए और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट जिनको हम कहते हैं, उन्होंने नेशनल वर्कशॉप ऑन क्रिप्टोलॉजी ऑर्गेनाइज किया है। तो इसी वर्कशॉप में साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इन सब के बारे में भी डिस्कशन की गई है। और इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो कैसे जो है हम इंश्योर कर सकते हैं, उसी को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस की गई हैं। तो क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी तो क्या कहती है कि आप किसी भी प्लेन टेक्स्ट को जो रीडेबल है उसको आप साइफर टेक्स्ट मतलब नॉन रीडेबल फॉर्मेट में एक तरह से इनक्रिप्ट करके किसी को आप भेजोगे, तो सिर्फ सेंडर साइड से जब आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया है और किसी को भेजने के लिए कि कोई उसको जो है वो पढ़ ना पाए, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। मतलब सेंडर जो है मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। जो क्रिप्टोलॉजी है वो इसका पेरेंट है, वो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। क्रिप्टोलॉजी के अंदर आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब जो ब्रॉड टर्म है वो है क्रिप्टोलॉजी, और जो एक उसका एक फॉर्मेट है वो है जो, या उसका एक आर्म है वो है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है तो क्रिप्टोलॉजी जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों साइड से जो है वो चल सकती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is prevention of cruelty to animals. So this topic is important for your social issues. So a draft of prevention of cruelty to animals amendment bill has been prepared by the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying, and this has been opened for public comments until December 2022. So you know that this act is already there since 1960, which was authored by Rukmini Devi Arundaleji, and this act was passed in December 1960, and it has established the Animal Welfare Board of India, and
then what is the need of amending this law? You know that there have been several cases where animal abuse was witnessed, and but the if we look at the provisions under the PCA, or the Prevention of Cruelty to Animals Act, then under section 428 and section 11, the penalties are just very low. Okay, a fine of just 10 or 50 rupees, or in the very serious case it is just 25 to 100 rupees, and jail term or is also available. But still the penalty is very light, and it is not acting as a deterrent to these people who are abusing animals. So in 2014, the Supreme Court in Animal Welfare Board of India versus A Nagaraja and others case has said that Parliament is expected to make proper amendment to the PCA Act so that it can serve as an effective deterrent to the violation of the Act's provisions. So several MPs since 2020 were asking. So in October 2021, the government said that they are bringing a bill and they will be amending the PCA Act, and it will after cabinet approval, it has now been presented. I'm sorry, it will be passed by the Parliament after cabinet approval. But now the draft bill has been shared. Once it is it will be cleared by the ministry, then the cabinet will clear it, and then it will be passed by the Parliament. So what are the proposed amendments to this law? So of course the punishments have been made tighter, and stringent punishments have been the provisions for stringent punishments have been made. Several offences have been made cognizable. Cognizable means that once you commit this offence, you will have to go to the court, or the justice would be served by only court. There will be no scope of out of court settlement. The draft bill has also proposed bestiality under the category of gruesome cruelty. Bestiality means having sex with an animal. Okay, so this has also been made a gruesome cruelty towards towards an animal. Also, a community animal whose ownership or whose responsibility is not taken care by any individual or organization, then the responsibility of that particular animal would be taken care by the state government or by the Animal Welfare Board. So the next topic is National Anti-Profiteering Authority. This topic is important for your economy and governance topics both. From December 1, all complaints related to GST profiteering will be dealt by India's Antitrust Watchdog Competition Commission of India, because the government is disbanding the National Anti-Profiteering Authority from the next month. So you know that currently all the consumer complaints with respect to not passing of GST rate cut benefits by the suppliers towards the consumers are dealt by Directorate General of Anti-Profiteering, and this NAA, the National Anti-Profiteering Authority, would the tenure of this authority would end this month, and CCI would take over the control over these complaints now. You know that sometimes what happens is that I was giving an example of restaurants. Earlier there was GST rate of 18% over restaurants, but later on the government made amendment, rather the GST Council made amendment, and the GST Council made rate cuts, and now the restaurants are charged 5% GST. So what was happening there is that the suppliers or the restaurants owners were not willing to pass the benefit to the consumers. So in that case, National Anti-Profiteering Authority could come into the picture, and they could charge these restaurants with profiteering cases. Okay, so you know that in 2017 this was set up as a statutory body, and it was mandated to ensure that benefits of reduction of GST rates and also input tax credit are passed on to consumers by way of reduction of prices. Initially it was set up for just 2 years, till 2019, but later on it was extended for another 2 years. Then of course it has now been functioning till November 2022. So under this law, a 3-tier structure was envisaged. First the complaint was sent to state level screening and standing committees, then it was forwarded to Directorate General of Anti-Profiteering Authority, and only after that, at the third stage, the National Anti-Profiteering Authority would come into picture for investigation and passing orders. So why was it established? Like I was telling you, so as to enable the consumers to get benefit of reduction of tax and also benefit of input tax credit, which a supplier gets from the government or the GST authority. So because suppliers were not passing on the commensurate benefits to the consumers, so they were indulging in illegal profiteering. So that's why this NAA came into picture. So the next topic is periodic labor force survey. This topic is important for your economy section. So also the social issues section. So NSO has recently released the data
for July September 2022, and it has said that India's unemployment rate has dipped to 7.2% in this period. You know that Ministry of Statistics and Program Implementation under using the National Statistical Office conducts this labor force periodic labor force survey so as to see the labor force data in the country, and it is being done since April 2017. It estimates the key employment and unemployment indicators. It also estimates the unemployment and employment figures in both rural and urban areas annually. So what is the definition of unemployment? How it considers a person to be unemployed? So if a person has not done work even just for 1 hour on any day during the week, and but the person was available for work, then he or she would be considered as unemployed during that particular week or during that period. But what is the latest status, or what are the highlights of this periodic labor survey for this period? So unemployment rate among females has declined to 9.4% during this period in urban areas, of course, and in the males for urban areas, this unemployment rate has declined to 6.6%. So the next topic is Gulf Cooperation Council. This topic is important for your international relations. So India and Gulf Cooperation Council countries have decided to resume their negotiations for a free trade agreement. So you know that GCC is a political and economic alliance of 6 Middle Eastern countries: Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain, and Oman. And its headquarters is situated in Riyadh, that is in Saudi Arabia, since May 1981. The aim of this GCC is to achieve unity among its members. Supreme Council is the highest authority of this organization, and its presidency rotates periodically among the member states, of course, in alphabetical orders. So the Ministerial Council is composed of foreign ministers of these member states, and the Secretariat General acts as the administrative arm of this particular alliance. You know that India is the largest GCC is the largest trading partner of India, and you know almost $154 billion worth of trade happens between the two blocks, or between the two sides. 35% of India's oil imports come from this region, and 70% of gas imports also come from this region for us. So the next topic is cryptology. This topic is important for both your security and science and tech section. So recently, the Center for Development of Telematics has organized a national workshop on cryptology. And during this workshop, cybersecurity, quantum computing, post-quantum cryptography, all themes were discussed. And you know that cryptography is basically secure communication. There is a difference between cryptography and cryptology. Cryptology is a very broad term, and one of them is and one of the organs of this term is cryptography. Under cryptography, you study the conversion of plain text into ciphertext. Ciphertext means non-readable format. Basically, you encrypt that text and send it to the receiver. So only from the sender side we can see that cryptography happens, whereas the cryptology is both the conversion of plain text to ciphertext and conversion of ciphertext to plain text also. So basically it works on both ways, sender to receiver and receiver to sender. Okay, of course the receiver at that in the opposite direction becomes the sender in that case. So basically it is both studying the encryption and decryption part. So cryptology is a broader term than cryptography. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.